नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सो आज मो सहित अच्छा श्रीतम भाई। हाय श्रीतम भाई। हाय आपणकर केबे आपन लगिला कि माने आपण बाहर जा चाहूँ माने कौन पे आपन से मोटिवेशन आसिला व्हाई व्हाई कारण मु जेतेबेले मु चाकरी करथली इनिशियली 2 इयर्स मु बहुत किछि सिखिया पाइली इंडिया रे। मात्र आफ्टर 2 इयर्स मोर लर्निंग कर्व बहुत ही स्टैग्नेंट हो गला। मते बोरिंग लागला कि सेम काम अगेन एंड अगेन करछि। तो सेतेबेले भी मोर सब बेले ए पढ़िबा आ सिखिबा मनोवृत्ति एडा मोर सब बेले पई अछि। एबे भी अछि, एबे भी मु नुवा नुवा जिंस जहा भी सिखिया चाहूछि सिखुछि। मु लर्निंग इंप्रूव करिया पई मु जॉब चेंज भी करि पारथांदी। जॉब चेंज करी नुआ जॉब नहीं था मात्र से भी किसी गारंटी नथला कि मु केते सिखिबी। और सेकेंड कथा लगी जे मास्टर्स जते शीघ्र मनीष करिवो सेते बेटर रहइबो कारण जॉब तो केते बेले हेले भी करि पारिबो। मात्र 40 वर्ष कि 35 वर्ष रे गोटे मास्टर्स करिया आ 20 कि 25 वर्ष भीतर गोटे मास्टर्स करिया देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज मनीष रो गोटे चार्म थाए, गोटे पैशन थाए, गोटे टाइम थाए, गोटे फेल हबा पई गोटे चांस थाए। मु 40 वर्ष धर मास्टर करी मु फेल हेली मो बगरा बेसी समय नथि मात्र 25 वर्ष रे धर मास्टर्स करी मु आउ गोटे वर्ष एक्स्ट्रा नेबी 2 वर्ष जगह 3 वर्ष नेबी देन आल्सो इज परफेक्टली फाइन। मु किछि मास्टर्स टाइम रे मु किछि अन्य भी एक्सप्लोर करि पारिबी। सो जल्दी मास्टर्स करियार बहुत ही एडवांटेजेस अछि। तो सेति पई मु डिसाइड करली कि लेट्स गो फॉर अ फुल टाइम मास्टर्स। जेतला आपण जॉब करूथिले जॉब कला परे पुणी आउ थरे स्टडी को आसीबा समटाइम्स माने लोक मान डिसीजन से नहीं पारंतनी तो आपण नेले बिकॉज ऑफ फैमिली सपोर्ट और बिकॉज ऑफ योर ओनली मोटिवेशन लाइक द डिजायर आई वुड से बोथ। मोर निजर पर्सनल डिजायर थिला टू लर्न एंड टू गेन न्यू नॉलेज एंड फैमिली वाज आल्सो सपोर्टिव ऑलवेज एजुकेशन रे एंड आल्सो फाइनेंशियली मोर किछि प्रॉब्लम नथिला। सो बेसिकली मते डिसीजन सब विन इन सिचुएशन सब हुए तो मते किछि डिसीजन नवर प्रॉब्लम नथिला। एतबे मु भी कहबी कि युवा पीढ़ी मानगु it's not like बीटेक पर संगे संगे एमटेक कर दियो, मे बी बीटेक करो and then gain few years of industry experience 2 to 3 years and then go for a masters because you can completely relate what has been taught in the industry to what you need to acquire in the masters. So you can completely relate how the industry changes or how you can apply your knowledge because बीटेक रे जहाँ भी पढ़ा होची that is not basically application, that is basic foundations of what a technical engineering knowledge is. तापर तुम इंडस्ट्री के आसलो 2-3 वर्ष कि वर्ष 2 वर्ष सिखिलो then you know how to apply that knowledge. आ मास्टर्स रे जाय कि you can go a little bit extend that okay ए नॉलेज टा ए भले अप्लाई होची मे बी मते ए भले पढिया दरकार कि ए जिंस आउ डिगे इन डेप्थ रे मते जिबा दरकार एंड देन यू कैन डिसाइड कि पीएचडी करबार अछि कि नै। एंड जदी पैसा रो प्रॉब्लम होची आजिकली लोन रो भी बेसी किछि प्रॉब्लम नाइ। इफ यू आर गोइंग इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट देन आई थिंक यू शुड टेक द रिस्क बिकॉज द returns will be very high in the long term. आ केबे हेले भाबने कि जे तुम मास्टर्स करला पारे आजी लक्ष्य पाउछो मते 5 लाख मिले that will never happen. The advantage of doing a technical masters will have over the time maybe 5 वर्ष भितर तुमको से एडवांटेज मिले पारे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सेकंड इज नेटवर्किंग। तुम मास्टर्स करला भितर तुम खाली टेक्निकल जिंस तुम बहुत प्रोफेसर्स इंटरनेशनल फ्रेंड्स एमानर नेटवर्क रे पहुंचबो जोडा कि तुमको 10-15 वर्ष परे कि in the long run of your life will be advantageous to you. So don't expect the outcome of a master very immediately after the end of masters. It will come but you have to be patient enough and in the long run it will always be advantageous. Okay. जेतला आपण प्लान कले कि आपण बाहर को पढिबा जिबार अछि राइट व्हाई नेदरलैंड Why Netherlands? Because मते यूरोप रो यूएस रे मते किछरा यूनिवर्सिटीज मिलुतला बट द कोर्स फीस वाज अराउंड 56 to 60 lakhs. तो एते मते मो पाखरे पैसा नथला मोर बजट थला मैक्सिमम 30 lakhs भीतर किन सारबी माने लाइक फूडिंग लॉजिंग एंड ट्यूशन एवरीथिंग मोर जेमते कि अराउंड 12 to 13 lakhs मोर सेविंग्स थला आउ 5 to 6 lakhs मो लोन लेथली आउ 10 lakhs घरे भी देथले। ओके सो विद इन 30 lakhs मोर बजट थला तो सेति में म देखली यूरोप रो बेस्ट यूनिवर्सिटीज कोडा थला। तो मते ईआईटी जोड़ा कहले यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी से ही प्रोग्राम थ्रू मते दिया गला कि चूज 2 बेस्ट कॉलेजेस ऑफ यूरोप 1 ईयर एठी करियो 1 ईयर सेठी करियो। इज इट डबल डिग्री प्रोग्राम? या इट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम। डुअल डिग्री मास्टर्स प्रोग्राम हमें भी वीडियो रे तार लिंक भी हमें दे परबा। आ गोटे ऑप्शन थिला कि गोटिए कॉलेज रे ही 2 वर्ष तमे करतियो। सो सेटा भी थिला मते दीटे जगह रु एडमिशन मथला गोटे ईआईटी रु जोथरे मते ऑप्शन दिया गला फर्स्ट ईयर तमे गोटे कॉलेज सिलेक्ट करो सेकंड ईयर आ गोटे
आउ गोटे ऑप्शन थिला मो पाखरे डायरेक्ट नेदरलैंड्स रो भी 2 इयर्स फुल टाइम मास्टर्स रो भी आस्थिला मात्र को ए जो ईआईटी टा थिला सेटा पार्शियली फंडेड थिला तो सेते पई कोर्स फीस 8000 यूरोस पर ईयर से टाइम रे थिला एबे तो अधिक आ जाय छी आपण 2014-15 टाइम रे आपण आस्थिले यूरोप राइट नेदरलैंड आपण चूज करले कि सॉफ्टवेयर पर आपण मास्टर्स करिया पई एतो बळे यूरोप रे माने डिजिटल रो एते कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थिला से टाइम रे काहे ना माने यूएसए इज द हब ऑफ डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइक सिलिकॉन वैली राइट आपण तो यूरोप रे आसले आपण को वेल एडवांस नॉलेज आपण मिलुथला ना मिलु नथला हाँ हाँ कहबा गले इफ यू सी द इनोवेशंस एंड एवरीथिंग यूएस इज ऑलवेज अहेड ऑफ यूरोप बट द थिंग इज दैट द रिसर्च जोड़ा कि यूरोप रे होची रिसर्च इज ऑलवेज गुड एंड एट पार विथ यूएस maybe the job market rate salaries will be much higher and for tech entrepreneurs basically the support in US and the government support is maybe a little bit more much more investors over there but matro am पढ़िया aspect जो देखिए it's always there for example major research world रो जहाँ भी होची many of them has come from Europe so research देखिए तुम जदि knowledge और ज्ञान हासिल करियार अछि in Europe you will find good universities and Germany is also a very good country for doing masters like over here Germany रो best part है कि public universities education is completely free जेमति कि मते तो tuition fees दबा पड़ला but over here in technical universities TU9 कोचंदी basically so in those if you get admission in one of the TU9s then basically your education is almost free German engineering masters system is really good but the only problem is that Germany रे tech adoption is a bit late and second तमे जदि यूरोप रो देखियो यूरोप is a very like diverse culture और तार economy is also diverse for example western Europe Scandinavian country which is northern Europe like Finland Norway Sweden Denmark तापर तमर eastern Europe पळे आसला जेमति कि बुल्गारिया रोमानिया तापर southern Europe जेनि कि पोर्चुगल तापर इटली हंगा but if you see economically the Scandinavian countries जेमति कि Norway Sweden Finland Denmark and western Europe for example Germany Netherlands Belgium Luxembourg ए countries गोटे Switzerland these are the countries जोडी इकोनॉमी भलो चलची आउ डिजिटल एडॉप्शन भी बहुत भलो अछि आ सब कंट्री भितर गोटे कंट्री जो टेक्नोलॉजी रो एडॉप्शन टिके स्लो अछि एमते नै कि जे खराब अछि स्लो अछि इज जर्मनी तारे डिजिटल still they are believing in letters and paperwork bureaucracy आउ एठी भी किछि हेले भी गोटे स्टार्ट करिया को हेले you need a lot of government work and bureaucracy is really high but if you go to countries like Netherlands is a very good example सेठी बहुत सब किछि फास्ट चले and even if you go जेमति मु Netherlands रे थिली आ मोर पेपर वर्क माने फॉर एग्जांपल मते पेपर वर्क मोर वीजा हंगा करिया जिबार थिला मते माने डच जणा नथला but immediately they switch to English so they are very adaptive आ एठी मते सेम काम करिया गोटे ट्रांसलेटर नै के जिबा पड़ला but Berlin is quite different Berlin is very different सेति पय मूवी एबे around this is my 7th year in Berlin मते एबे जर्मन आसुनी but still I am living over here कारण tech industry रोले it's most of the company even German companies be work in English तापर Berlin रे आपण feel करिवेनी you are a outsider like you are an outsider you never feel like that because Berlin रे तमे जो population देखियो it's basically completely international and there are very few Germans right and that is one of the major reasons and if they are few Germans they are not from Berlin they are from different part of Germany so सेमान भी चाहते आमे टिके केमि hang out करिवे different foreigner मानस so it's like more open and it has historically been like that जेतला आपण मास्टर करि आसले that आपण 2 years थिला right just imagine माने 2015-16 आपण मास्टर्स कंप्लीट करथिले 15 to 17 yes ओके 15-17 तो तापर जॉब सिनेरियो केमती थिला तो एम्बेडेड सिस्टम्स रो जॉब सिनेरियो 2017 रे बहुत ही भल थिला ऑल ओवर यूरोप एबे भी भलो अछि आ एम्बेडेड सिस्टम्स रो डिमांड सब बेले पई थिला and because most of the systems consumer electronics is always internet of things हमें जोड़ा कोचे सेटा बहुत बूम रे ही चलची so basically embedded systems पई बेसिक किछि प्रॉब्लम हला नहीं if you are doing masters from a good technical university then basically the job industry and Europe रे कोठी हेले भी तमे masters complete करो the entire European market is open for job so मु बे चाहले Schengen visa so मु बे चाहले नॉर्वे रे जॉब खोजी पाई परबी and Netherlands जेमति कि Netherlands रे मोर masters सारथली but Germany रे मु आराम से जॉब पाई परली so basically for embedded systems that is not a problem at all so तमे masters
को यूनिवर्सिटी रू करछो आ स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट को डोमेन रे करछो आ तमर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को डोमेन रे अछि एगुडा को डिटरमाइन करियो कि तुम जॉब मार्केट केते इजीली तो एम्बेडेड सिस्टम रे लैंग्वेज बैरियर किछ रहबो इंग्लिश की no it's always English. And second thing is that right now the booming job sector is in Europe, I would say all over the world, is AI because of the generative AI revolution and change that has come. OpenAI also OpenAI is basically a part of generative AI. So basically jo generative AI ro jo movement asichi, it's basically a transformative movement. Like 1990s re internet was one of the major revolutions in the tech industry, which completely changed the game and the way people across the world started connecting with each other. Like in 1990s it was the internet technology revolution. In 2000 it was, let's say, the smartphone revolution. And right now if you see in present era is the AI revolution. So तमे जदि यूरोप रे गोटे भलो मास्टर्स एआई की एमएल रे करलो, भलो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नेलो, you can always go back to India and earn a lot of money. Current rate रे आपनकर per annum income केते, like in the salary, because Germany it's, you are paying lots of tax. Current Germany देखिया गले मोर gross income जो after tax मोर gross टा है 7,000 euros, that is like 84,000 euros per annum. तो मोर हाथ को आसला around 4,500 हे जाउची माने after paying tax. So I'm paying I think around 41% tax. That includes insurance. 4,000 euro, it's all out 50,000 euro per annum. That no 4,500 around. Okay, like 55,000 euro per annum. Yeah, we can say like 50 lakhs per annum in Indian currency. Yeah, net income I would say. Yeah, net income 50 lakhs per annum. 500, yeah, around. Main problem of Germany है कि आंकर population is aging. But they are trying to innovate in the field of engineering. तो सेत में ସେମାନେ इंडिया रो बहुत लोक आनछन कारण ସେମାନେ जानछन कि इंडिया रे बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स अछंदी. सेत में इंडियंस मान गुडी के एडी वीजा मिलवा इजी. आउ सेकंड द बेस्ट वे तमे जदी यूरोप रे चाकरी किछि वर्ष करी कि एडार कल्चर टिक एक्सपीरियंस करिया चाहछे तो द बेस्ट वे टू एंटर is via masters, right, via technical masters. Yeah. And I would say कि Germany रो masters करिया बहुत ही भलो because Germany रो salaries as compared to all over Europe is good. And I would recommend कि southern part की eastern part of Europe को न जानतु. Germany, Netherlands कि बेल्जियम ए भलिया कंट्रीज रे कि यूके भी हो स्विट्जरलैंड हो ए भलिया कंट्रीज रे मास्टर्स करियो चेष्टा करंदु. आउ वंस मास्टर्स कर देले जेमदि कि कहली एम्बेडेड सिस्टम्स हो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो कि एआई एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग हो ए सब रे मास्टर्स करला पळे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब बिकॉज दे नीड पीपल. मात्र मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग डोंट डू मास्टर्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग मास्टर्स. तमरो निजर इंटरेस्ट भी रहबार अछि. जस्ट अज्यूम दैट जण ओडिसा रे एबे जण जे हम व्यूअर्स सपोज तांग 20 इयर्स की 18 इयर्स से 12th परे एबे आपण तांग कोन माने करियर पाथ गाइड करिवे कि 12th परे से कोन करियर से चाहउचंती मु टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जीवा पई तो आपण केमते गाइड करियो तर तांग करियर को से बेस्ट करि परिवे. हमु जदी इंजीनियरिंग फील्ड रे टेक फील्ड रे आसीवार अछि देन बेसिकली इट्स गुड दैट तमे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस रे तमे बैचलर बीटेक कर परिबो किंबा यू कैन आल्सो डू इट इन एआई एमएल. इंडिया रे ऑलमोस्ट जेई एप्लीकेंट आई थिंक 11 lakhs or 12 lakhs. ओके यस ता भीतर हमर बेस्ट इंस्टीट्यूट जदि हम आईआईटी धरिबा तादर 50,000 या 60,000 सीट आईआईटी मिलु जदि आईआईटी एनआईटी माने सेंट्रल इंस्टीट्यूट और रीजनल कॉलेजेस जेमदि भी थाउचे हां में से 1 लाख सीट रिमेनिंग 10 lakhs जो मान स्टूडेंट से मानको भलो इंस्टीट्यूट ही मिली परिबे. प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी दे विल नॉट एबल टू गेट ए गुड इंस्टीट्यूट व्हिच विल इक्विवेलेंट टू आईआईटी और एनआईटी राइट. तो से जगह रे लोगों क्वालिटी एजुकेशन ही मिलु जोटा मु भावे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो जेहेतु जो मान आईआईटी गले दैट्स इट्स ओके फाइन बट जो मानको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिलुनी से माने रेस्ट्रिक्ट रहबा कथा ओनली इंडिया और दे आर आल्सो नीड टू प्लान फॉर अब्रॉड नहीं जो माने फॉर देयर बैचलर्स. आजकल ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन. एक्चुअली द एडवांटेज ऑफ ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट इज नॉट द टेक्निकल एजुकेशन इटसेल्फ बट इट्स द नेटवर्क. मार मतलब नहीं कि जे गोटे पिला जेमदि कि मु आईटीआर रे पढथली आर मतलब नहीं कि जे मु आईटीआर रे पढी कि जो टेक्निकल नॉलेज टा पाई परिबी गोटे पिला आईआईटी रे पढी कि ताडो अधिक पाई जिवो. ऑफ कोर्स
से पाई परिवे बट एमती ना कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अच्छे से तुम चाहिए पढ़ी पारियोनी and now with the advent of generative AI like for a chat GPT and internet resources available तमे जोठी भी चाहिए नॉलेज गेन कर पारिबो तो आईआईटी रे रही कि तमर टेक्निकल नॉलेज तमे जति की पाई पारिबो सेडा गोटे प्राइवेट कॉलेज रे रही कि भी पाई पारिबो छोटो कॉलेज रे बिकॉज इंटरनेट इज ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीवन इट डज नॉट डिफरेंशिएट वी आर फ्रॉम आईआईटी और अदर कॉलेज बट द एडवांटेज ऑफ आईआईटी इज दैट इट हैज अ नेटवर्क